ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। और कढ़ाई आपकी नॉन स्टिक होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टील की होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे। ये हलवा हमारा बिल्कुल बन करके रेडी है। तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हलवा हमारा बन कर के एकदम से रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही टेस्टी था ये। इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा ये हेल्दी रेसिपी। आपको फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।